శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి కరుణా కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. గోవింద గోవింద. శ్రీవత్సవక్షసం శ్రీశం శ్రీలోలం శ్రీకரగ్ரஹம் ஸ்ரீமந்தம் ஸ்ரீநிதிம் ஸ்ரீட்யம் ஸ்ரீனிவாசம் பஜேன்னிசம் என்று அந்த திருமலையப்பனை செவித்துக்கொண்டு ஆவணி அவிட்ட நல்வாழ்த்துக்கள், சிராவண பௌர்ணமி மற்றும் ரக்ஷா பந்தன நல்வாழ்த்துக்களுடன் இந்த கல்யாண உற்சவத்திற்காக பக்தர்களை வரவேற்பது திருமதி ஏ. அருணா. இன்று திருவோண நட்சத்திரம், ஆவணி மாதம், திங்கள் கிழமை. விசேஷமான இந்த நன்னாளிலே, அதாவது சிராவண மாத பௌர்ணமி கருட சேவை மாலையிலே செவிக்க இருக்கிறோம். ஆவணி
அவிட்டத்திலே பௌர்ணமி என்று பெருமாளுடைய திருநக்ஷத்திரத்திலே அவருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை அடைந்திருக்கிறோம். பக்தர்களே, ஒருமுறை கோவிந்த நாமத்தை கூறிக்கொண்டு எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவிக்கலாம். திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமி தஸ்மை சமஸ்த வேதார்த்த விதே விகனசே நமः. பிரதிஸ்மிருதி பூர்ணம் சாஸ்திரகல்லோல சங்குலம் விஷ்ணு பக்திதகம் சுத்தம் வந்தே ஸ்ரீகுணோர்ணவம். பிராணாநாயம்யாம் ஓம் பூः ஓம் புவः ஓம் ஸ்வः ஓம் மாः ஓம் ஜனः ஓம் தபः ஓம் சத்யம் ஓம் தத்சவித்ரவரேண்யம் भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओमापो ज्योतिरसामृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम्. अस्यां शुभतिथौ असदेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीयपदेवशात्मस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवक्रमाङ्गं स्थण्डिलपरिधिपरिसनादि सर्वावृत्तन्त्रविशुद्धं शान्तत्वं स्वपुण्यावाचकर्मरिष्यादं निर्विघ्नप्रसाप्यर्थं विश्वक्सेनादनं तदङ्गपूर्वे कलशाराधनं करिष्ये. ओं धरा सप्तशमांशेषु सरस्वरिषु विभूर्देषु अभोविरण्णन् मदिपादेशे गुणान्ताकं सुचरकं सुशर्मा इदमापस्वाश्वतमा शान्ता शान्तमा शुभाश्वतमा पोता पोतमा पुण्या पुण्यमा मेध्या मेध्यतमामतां दृशाः पोता ब्रह्म पवित्रेण पोता सूर्यसरस्वतिः आपो वायुगं सर्वं विश्वा भूतान्यावः प्राणावाप प्रजापो नमा भवदाप सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो यजविश्वाप सत्यमाप सर्वा देवतापो भूर्भुवस्वरापो. अस्मिन् कुम्भे गङ्गासिद्धिरावाहयामि. एतेषु वर्णे सहस्रमिज्ञाः पाठाभिधाः पुरुत्र तेभ्यो नन्द्रस्वतात् विष्णुऋष्वे देवामुञ्चन्तमथ स्वस्त्या. वरुणमावाहयामि बृहस्मावाहयामि रक्तां मृदुरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि. वरुणाय नमः. वरुणस्येदमासनं. वरुणाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि. इदमर्घ्यं समर्पयामि. इदमाचूर्णं समर्पयामि. एते प्रतस्त्रत्र्याभरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षताः सर्वोपचाराः. सर्वतीर्थ्यालं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यवान् निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनन्दर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं याप्तिं सङ्केतं सुस्पर्धाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाकमच्चेत्. आग्नेयस्माद्दामे त्वाश्वेदात्तं यतोत्सम्भोः वैराजन्ते सतन्धत्तां प्रेक्षां दिशाविधानावनादि यामे स्थान् दातों भूः पद्माकर्मणे. विश्वक्सेनमावाहयामि. शान्तमावाहयामि. हरमावाहयामि. अमितमावाहयामि. तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि. वामेज्यामावाहयामि. तत्पत्नी विश्वक्सेन सेदमासनं. विश्वक्सेनाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि. इदमर्घ्यं समर्पयामि. इदमाचूर्णं समर्पयामि. सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेता कर्मणान् विघ्नान्ति. आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् प्रसमाप्य कुर्यात् सुप्रभातस्य. विश्वक्सेन सपूजनं भगवद्ब्रह्मण्याः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये. ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतमस्तु प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुतेः. शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुतेः. शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुतेः. शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे. पृथिव्या सप्तधाम्भिः इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानि देवनं समूढमस्वागं सरे. त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने. विष्णोः कर्माणि वसुदेतो आवृतानि वसुषि इन्द्रस्येजसखाः. तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि वचिक्ष्णातुं तद्विप्रासो विन्यवोजार्ध्रवागं दस्वन्ते विष्णोऽद्युत्परं पदं. द्रविणोदा द्रोणशस्त्रस्य द्रविणोदाश्चर्यस्य प्रगं सदे. द्रविणोदा वीरविदेशन्नो द्रविणोधारास्ति दीर्घमायुः. यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कर्वितमविषं. यदा वै सूर्यवदेति यत् नक्षत्रं नेति यावत् तत् सूर्यो गच्छेति यत्र धन्यं वस्येति तावत् गुरु तत्कारी स्यात् पुण्याः यवकृते. ओं भूवति पुरोक्तमुष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं स्थण्डितपरिधिप्रसन्नः सुरोत्तन्त्रविशुद्धितं शान्तत्वं सपुण्यावाचर्मणि. पुण्यां ब्रुवन्तो अब्रुवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु. कर्मण पुण्यां ब्रुवन्तो अब्रुवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु. कर्मण पुण्यां ब्रुवन्तो अब्रुवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु. स्थिनेन्द्रोर्धस्वास्तिनः पूषाश्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वरिष्णेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ददातु. ओं भूवति पुरोक्तमुष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं स्थण्डितपरिधिप्रसन्नः सुरोत्तन्त्रविशुद्धितं शान्तत्वं सपुण्यावाचर्मणि. स्वस्तिं ब्रुवन्तो अब्रुवन्तु कर्मणे स्वस्ति. कर्मणस्तिं ब्रुवन्तो अब्रुवन्तु कर्मणे स्वस्ति. कर्मणस्तिं ब्रुवन्तो अब्रुवन्तु कर्मणे स्वस्ति. वृद्ध्यास्माभिनं संसिद्ध्यां तं देवं त्रिधेयन्नोऽस्तु. अनुराधान् हविषावृध्यन्तः शतं जीवेम सदस्वीराः. ओं भूवति पुरोक्तमुष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं स्थण्डितपरिधिप्रसन्नः सुरोत्तन्त्रविशुद्धितं शान्तत्वं
पुण्यावाचिनुद्धं भ्रंतो भ्रंतु कर्मरुद्धतांकर्मरुद्धिं भ्रंतो भ्रंतु कर्मरुद्धतांकर्मरुद्धिं भ्रंतो भ्रंतु कर्मरुद्धतां वृद्धि समृद्धि पुण्या समृद्धि आपोष्टामयभोस्थानं ऊर्जितादना महेरण शिक्षे योपस्वदमोरदस्तस्य बाल्यतेन वृष्टिरेमात्रः तस्मारङ्गमापो शिक्ष्या जनुधा आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णास्यः पावकायाः जातः कस्य भोजाः सुन्दरः अग्निया गर्भं द्रविरूपास्तानापसृग्स्वना भवन्तु पौमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता समनात्मा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनवाधिया पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा गृणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रदे सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रम् यतोऽद्यां गम्भीरण्यं तेन ब्रह्मविदावयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनेते सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरणसमीक्षाः यमो राजाः प्रमणाभिः पुनात्मा जातवेदामोर्जयन्त्वाप्नातु तच्छय्योरावृणीमहे गातिं यज्ञाय गातिं यज्ञवती दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातुभीषणं षण्णोऽस्तुतिपदेः षण्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्याहान्ति देवार्तिरामार्जयन्तां दक्षिणायान्ति स्मासाः पितरामार्जयन्तां प्रदीक्षान्तिष्गृहाः पशुवामार्जयन्ताम् उदीहीच्यान्दिशा बोहिदेव वनस्पतिमार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायामिति यज्ञसंवत्सरो यज्ञवतिर्मार्जयन्ताम् अधोदराद्रे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतां हीयानात्मा गुहायां नीतोऽस्यन्तः तमः कथं वसति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् वास्तोहास्पदे प्रजानि यस्मान् स्वाविशोनमिव भवानः यत्ते महे प्रजन्नो शश्वस्य नेद्यपदे षण्चतुष्पदे वास्तोहास्पदे शग्मया संसदा ते सक्षेमे शरण्यागात्मत्याः आवक्षेमतयोगी वृन्नो यूयं पादस्वस्तविस्सदानः अमीवः वास्तोहास्पदे विश्वारूपाण्याविशन्ने सखात् सेवयेधिनः अणोरणीयान् महतं हीयानात्मा गुहायानि दास्यन्तः तमः कथं वसति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्तः प्राणाः प्रभवन् सप्ताः सप्ताच्च समितः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागिरियत् सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयोरसाश्च तेनेषु भूततिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषर्वप्राणां वैश्वा मृगानां सेनागृध्राणागृसैतर्वणानागृसोमः पवित्रमत्येदरेपन्ने वरुणान्मः शिक्षणान्मः पुनः पाद्याचं सर्पयामि वरुणान्मः शिक्षणार्थापासा गुडाभरणवेदयान् ताम्बूलं सर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षमाय पुनरागमनाय च ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாஜனத்தை செவித்தோம். அடுத்ததாக திருமுலை சாற்றுதல் என்னும் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். பகவானே வேங்கடவனே திருவோணத்தானே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று வேத பாகங்களுள் சிறந்த பகுதிகளும் முடிகளும் 1000 கண்களும் 1000 திருவடிகளும் 1000 என்று ஓதுகின்றது. தமிழ் மறைக்கு உபனிஷத்தமாய் விளங்கும் திருவாய் மொழியும் தோள்கள் 1000 முடிகள் 1000 துணை மலர்கள் கண்களாயிரத்தாய் நாள்கள் 1000 பேர்கள் 1000 என்று புருஷ சூக்தம் கூறுவதை கூறாத தோள்களையும் பேர்களையும் முன்னம் பின்னம் வைத்து பேசியது. புருஷ சூக்தத்திலே சர்வேஸ்வரனான பரம புருஷனை நிர்ணயிக்க சஹஸ்ரநாமமும் பரதேவதையை காட்டி அதன் அந்த அனந்த கல்யாண குணங்களையும் விளக்குகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. திருமுலை சாற்றுதல் என்றால் நவதானியங்களை மண் பாலிகைகளிலே சேர்த்து நீர் திருத்துழாயுடன் அக்ஷதையும் சேர்த்து பூஜை செய்வதே இந்த திருத்துழாய், அதாவது திருமுலை சாற்றுதல் என்று பெயர். தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியம். சர்வஜரான பீஷ்மாச்சாரியரிடம் தர்மபுத்திரன் பல தர்ம உபதேசங்களை பெற்று இருந்தால் கூட இன்னும் மனது திருப்தி அடையவில்லை. அப்படி அவரால் தெளிவு பெற்றாலன்றி அதுகாரும் பெற்ற உபதேசங்கள் பயன் தருவதாக இருக்காது என்ற எண்ணிக்கையுடன் 5 கேள்விகளை கேட்கிறான் தர்மபுத்திரன். சிறந்த தெய்வம் எது?
அடைய வேண்டிய முக்கிய பலன் எது? ஸ்தோத்திரமும் அர்ச்சனையும் செய்யப்பட உரியவன் எவன்? எல்லாவற்றிலும் சிறந்த தர்மம் எது? சம்சார பந்தத்திலிருந்து விடுபட எதை ஜபிக்க வேண்டும் என்பது. அதற்கு பீஷ்மாச்சாரியாரும் வரிசையாக கூறுகிறார். சிறந்த தெய்வம் யார் என்று கேட்டால் நாராயணனே பரதேவதை என்றும், அதன் பிறகு அந்த அடைய வேண்டிய முக்கிய பலன் எது என்று கேட்கும் பொழுது அவனே முக்கியமாய் அடையப்படும் பலன் என்றும், மூன்றாவதற்கு ஸ்தோத்திரமும் அர்ச்சனையும் செய்யப்பட உரியவன் எவன் என்று கேட்டால் அதற்கு அவனே துதிக்கப்படவும் அர்ச்சிக்கப்படவும் உரியவன் என்றும், நான்காவதாக எல்லாவற்றிலும் சிறந்த தர்மம் இது என்றால் அவனை துதித்தாலே சிறந்த தர்மம் என்றும் கூறப்படுகிறது. நாகராஜமாவாஹயாமி, சாஸ்யமாவாஹயாமி, சேஷமாவாஹயாமி, அனந்தமாவாஹயாமி. பிரசரதேவதாभ्यो நமः. இதமாசனம் இதம் பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, இதமர்घ्यं சமர்ப்பயாமி, இதமாஜ்யம் சமர்ப்பயாமி. சர்வோபச்சாரார்த்தம் அக்ஷதான் சமர்ப்பயாமி. ஹரி ஓம். ஸ்வஸ்தி நோः வேதாம் விஸ்வநாபக ஸ்வஸ்தி தேவேந்திரநருணः ஸ்வஸ்தி பூஷாம் சரோதாத்னः ஸ்வஸ்தி द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तेः वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ति आदित्यासोः भवन्तनः विश्वेः देवानोः अद्य स्वस्तेः वैश्वानरोपसरग्निः स्वस्तेः देवाः वन्द्रभः स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्तमसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति मध्यरेवती स्वस्तिरीन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इते कृधि स्वस्ति बन्धामनुसरेम सूर्याचन्द्रमसामिव पुनथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्तार्क्षमृष्टनिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसकं समत्सु बृहद्दिसोनावं वारुहेम अम्हों च माङ्गिरः सञ्जयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसादिताक्षं प्रेतबानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे स्वभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. பகவதே வாசுதேவாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருவோணத்தானுடைய திருநக்ஷத்திரத்திலே இன்று அவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா 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 என்று. அப்படி இந்த விசேஷமான சிராவண பௌர்ணமி, ஆவணி ஆவிட்டம், ஆவணி பௌர்ணமியிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இந்த நாளிலே திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த நாதமும் 1000 நாமமும் என்றால் பகவானுக்கு 1000 நாமங்கள். நம்மை எல்லாம் ரட்சிக்கும் பரந்தாமனுக்கு 1000 நாமங்கள். அப்படி அந்த பகவானை இப்பொழுது திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்திலே சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்படி தர்மராஜன் அந்த பீஷ்மரை கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது 4 கேள்விகளுக்கு பதில் கூறினார். அடுத்ததாக 5வது கேள்வியானது என்னவென்றால், சம்சார பந்தத்தில் இன்று விடுபட எதை ஜபிக்க வேண்டும் என்று கேட்க, அவன் திருநாமத்தை ஜபிப்பதே சம்சார பந்தத்தை போக்குவதென்றும் முடிவுகளை விளக்கி உபதேசம் செய்தார் பீஷ்மாச்சாரியார். கிருத்த யுகத்திலே தியானத்தையும், திரேதா யுகத்திலே யாகம் முதலியவற்றையும், துவாபர யுகத்திலே அர்ச்சனத்தையும், கலியுகத்திலே நாம சங்கீர்த்தனத்தையும் செய்தால் நற்கதி பெறும் வழிகளாக சாஸ்திரம் கூறுகிறது. அதனால்தான் இந்த கலியுகத்திலே சகஸ்ரநாம அனுசந்தானத்திற்கு முதன்மை முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதோ அப்படி சகஸ்ரநாமங்களை கொண்டவன் திருமலையப்பன். இதோ அவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பகவானை சேவிக்கலாம். ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட அந்த திருமலையிலே அந்த பகவானை எப்படிப்பட்ட ஆழ்வார்கள் எல்லாம் சேவித்தார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது, தொண்டரடி பொடியாழ்வார் அருளிய திருமாலை என்னும் அருளிச்செயர் பகுதியையும் பலர் அனுசந்தித்து கூறியிருக்கிறார்கள். அதேபோல் சகஸ்ரநாமத்திற்கும் திருமாலைக்கும் எத்தகைய தொடர்பு என்று ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, தர்மபுத்திரன் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பீஷ்மர் அளித்த விடைகளெல்லாம் திருமாலையில் இன்னும் விளக்கமாய் அமைந்துள்ளன. பீஷ்மர் விடை கூறிய முதல் ஸ்லோகத்திலே ஜகத்துக்கு பிரபுவான சர்வேஸ்வரனை அவன் திருநாமங்கள்
ஆயிரத்தாலும் துதிப்பவன் சகல துக்கங்களினின்றும் விடுபடுவதாக கூறியிருக்கிறார். ஆழ்வார்கள் திருமாலையின் முதல் பாசுரத்திலேயே அரங்கனை மூவுலகுக்குண்டு தமிழ்ந்த ஜெகத் காரணமென்று காட்டி அவன் நாமம் கற்ற செருக்கால் யமபடர் தலைமீது நடப்பதாய் முழக்குகின்றார். வேங்கடவனே ஸ்ரீவத்சவத்சசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலை யப்பனுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு நாச்சிமார்களுக்காக ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். இப்படி பார தேவதையையும் நாம சங்கீர்த்தனத்தின் பெருமையையும் இருவரும் தாங்கள் முதல் சூக்தியிலேயே காட்டிவிட்ட ஒற்றுமையை நாம் பார்க்கிறோம். பீஷ்மர் உபதேசித்தது போலவே ஆழ்வாரும் 3 கருவிகளையும் எம்பெருமான் விஷயத்திலே பயன்படுத்த வேண்டிய முறைகளை ஆவேகத்துடன் வலியுறுத்துகிறார் நமக்காக. பீஷ்மர் பரரூபத்தை இலக்காக வைத்து உபதேசித்தவற்றை எல்லாம் அரங்கனை அன்றி வேறொன்றினை காணா போராத இந்த ஆழ்வார் அரங்கனையே இலக்காக வைத்து உபதேசிக்கின்றார். சகஸ்ரநாமம் அவன் திருநாமத்தின் பெருமையை விளக்க அவதரித்தது போலவே திருமாலையும் அதற்காகவே தோன்றியது. சகஸ்ரநாமம் கூறிய தத்துவங்களை மிக எளிய தெய்வீக தமிழிலே விளக்கி பாமர மக்களும் உணர்ந்து கொள்ளுமாறு நமக்கு திருமாலை செய்யும் உதவி மிகவும் அரியதென்று கூறுகிறார்கள். இப்படியெல்லாம் அந்த சகஸ்ரநாம பாராயணத்துடன் திருமாலை அனுசந்தானத்தையும் சேர்த்து கொண்டு நாம் படித்து வருகிறோம். அப்படி அந்த எம்பெருமானை புரிந்து கொண்டு எம்பெருமானுடைய கைங்கரியங்களிலே ஈடுபட்டு இதோ திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே செவித்து கொண்டிருக்கிறோம் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை. நாச்சிமார்களுக்காக ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் செய்யும் பொழுது முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று, அடுத்து பூமி பிராட்டிக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற உள்ளது. ஆதி புருஷனான ஸ்ரீமன் நாராயணன் பிரபஞ்ச சிருஷ்டி தொடக்கத்திலே தன் சங்கல்பத்தாலேயே தனது நாபி கமலத்திலிருந்து பிரம்மாவை தோற்றுவித்தான். பிரம்மாவும் தாதா யதா பூர்வா மகல்பயத் என்ற வேத வசனத்திற்கு ஏற்ப முந்தைய கல்பத்திலே இருந்தபடி சமஸ்த ஜீவராசிகளையும் மனிதர்களையும் தேவர்களையும் படைத்தாராம். பிறகு இந்த ஜீவர்களுக்கு ஜீவனோபாயமாக யக்னங்களையும் அவர்களுடன் கூடவே படைத்தாராம். அப்படி படைத்து மனிதர்களை பார்த்து, ஹே மனிதர்களே, இந்த யக்னங்களால் தேவர்களை பூஜியுங்கள். தேவர்கள் அவைகளால் மகிழ்ந்து உங்களுக்கு தேவையான மழை, மக்கள், மாக்கள் முதலியவற்றை தருவார்கள் என்றும் அவர்களால் ஏற்படும் சுகங்களில் ஒரு பகுதியை தேவர்களுக்கும் அளித்து கொண்டு நீங்களும் அனுபவித்து கொண்டு சுகமாக வாழுங்கள் என்று ஆணையிட்டாராம். இப்படி பொருள்பட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலே பகவான் சொல்லுகிறார், சகயஜ்ஞா பிரஜா சிருஷ்டுவா புரோவாசா பிரஜாபதி அநேக பிரசவிஷ்யத்வம் ஏஷவோத்சவிஷ்ட காமதுக் என்று தேவான் பாவய தானேன தே தேவா பாவயந்துவா பரஸ்பரம் பாவயந்தக ஸ்ரேயः பரமவாப்யஸ்தா என்று அந்த பகவத்கீதையிலே கூறப்படுகிறது. இப்படி விளங்குவதன் பொருள் என்னவென்றால், ஒவ்வொருவனும் தன்னுடைய முன்னைய ஜென்மங்களில் செய்த தான தர்மங்களுக்கு ஏற்ப, புண்ணிய பாவங்களுக்கு ஏற்ப அதற்கு தகுந்த அளவிலே செல்வமும் வசதியும் பெறுகிறான் என்று கூறுகிறார்கள். இதோ அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம் ஆரம்பமாகிறது. शुद्धैरुक्तैर्वाहारुद्धांशं शुद्धाशीर्वाहान् मोक्तु मयि देवाद्रेणमाजन्ता मय्याशीरस्तु मयि देवहूति पूर्वैरिष्टास्याम तन्वासुवीराः महीजन्तव्यान् हव्यागोदसत्यामनुसमे अस्तु ये नवमानिगाहं कथमर्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजतामे उद्ध्वन्यमानमस्यामेध्यां पाप्मानं भजमानस्यन्तु शिवानस्सन्तु प्रजस्यन्ना माता पृथिवीतोकसाता जातवेद भुवनश्रेते हिंसतपसोज्य निश्चितैः अग्निमश्वद्धाधव्यवागं शमीगर्भार्जने अन्व्यामि अभूः
गदःपदिको गदयोनिरग्नि गदय समिद्धो गदमस्यान्नं गदः पुजस्वासहितो वहन्ति गदं पिबन्ति सृजा यक्षदेवान् आयुर्दाहाग्ने हविषोषाणो गदःपदिको गदयोनिरेधि गदं पीत्वामचार्गव्यं पिदेवत्रवृक्षदादिमम् उपावरोहजातवेदः पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं मनप्रजानन् आयुः प्रजामरिमस्मादे स्रदीति अनोद्रोणे ऐतेन मन्यस्वा अनुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा दिशुतप्रसवा ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मप्रसादिमस्रचा वेनावः सबुद्ध्यात्मास्विष्टासश्चोन्मदस्वः ब्रह्माणमवायं प्रजापतिमवायं पितामहमवा हिरण्यर्मावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुं सोमर्वन्तमा सोमो वीरं कर्मणिं धातु साधन्यं थिगं सभयं पितृश्राणं रदादस्मै सोमावाहयामि ज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवताबध्यत्तन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतामित्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानशदेहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवताबध्यत्तन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतामित्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानशदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञेः स्तो वायुभूतेस्तो विष्णोर्मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः परसरस्य पवित्रेः स्तो वैष्णव्यो देवसौतपसपुना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वरापो देवीरग्रे भोऽग्रिम् इमं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्तैष्पाणन्तूर्जय ततोर्जयुषमिन्द्रिणीध्वं पुत्रतोर्जय प्रोक्षितास्था विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु पोसि दक्षिणतो विष्णोऽस्तु पोसि विष्णोऽस्तु दत्तां देवेभ्यो विष्णोऽस्तु पोसि ददासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवताबध्यत्तन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतामित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानच्छदेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवताबध्यत्तन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतामित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानच्छदेहि ओं प्रणय दक्षप्रेतो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातमवाहयं ब्रह्माणमवाहयं इन्द्रमवाहयं अग्निमवाहयं सोममवाहयं सोममवाहयामि अग्निशोममवाहयं प्रजातमवाहयं ब्रह्माणमवाहयं इन्द्रमवाहयं सोनावाहयं मृतमवाहयं रुद्राणवाहयामि अपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमवाहयं बृहस्पतिमवाहयं मित्रमवाहयं वरुणमवाहयं आदित्यमवाहयं विष्णुमवाहयामि पूषाणमवाहयं कक्षमवाहयामि कक्षदेवस्वामवाहयामि औपासने यज्ञमवाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनपान्द्राष्टनपाग्नेष्टनपा सोमाष्टनपामि अग्नेष्टनपां सोमाष्टनपाग्नि सोमाहाभ्याण्डष्टनपामि प्रजापतिष्ठनपां ब्रह्मणेष्टनपाम् इन्द्राष्टनपां वसुभ्योष्टनपां मरुद्भ्यो जुष्टनरपां रुद्रेभ्यो जुष्टनरपामि अपस्पृश्य श्री महाविष्णुमेष्टनपां मित्राष्टनपां वरुणाष्टनपामि आदित्येभ्यो ष्टनपां सिद्धाण्डष्टनपां पूष्णेष्टनपां कक्षाष्टनपामि कक्षदेव सोमाष्टनपाम् औपासनेज्ञाष्टनपामि यज्ञदेश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनरपामि आज्यं त्रिपतिश्रयामि चरन् त्रिपतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिधस्य स्वाहा अमृतं स्वारणमसि अन्तर्दमृक्षान्तरतारातयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारातयः चिक्पतिस्वाप्नः त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्तरस्मै स्वाहा वाक्पतिस्वाप्नः त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्तरस्मै स्वाहा देवस्त्वासविदाप्नः त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्तरस्मै स्वाहा मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यक्ष धेनुसन्तु इंद्राय नमः निरुते नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेसे नमः सहोसे नमः विरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विषत्प्रिये नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः तेन निस्वा नमतेन निस्वा सरस्तेन निस्वा देवसुतप्रसुवा षष्टिशतसहस्राणि समक्षमरुद्धमानया ऐन्तेत्मा आत्माजाद वेदस्तेनेद्वसवद्रजेद्वतेजास्मान् प्रजा ब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधयासु नोपासनाडुण्डे ब्रह्मन् समुद्धम् आधास्ति आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासनेज्ञाय स्वाहा यज्ञदिश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो सो स्वाहा तेन मुखस्थाः तेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसहितप्रासावीः ओं भूतिविरोत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं
आघार होमांते स्वरमंदिरमुपरियातृणात् प्रायस्तात् सम्मतो दिवादिविष्णुं होष्येतेन्मनिस्वा सरस्तेन्मनिस्वा देवसविता प्रसवा ओम मतो देवाहुन्दतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानि देवतं समूढमस्वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतो आवृतानि विश्वसै इन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवीव चक्षुरात् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यमोजार्ध्रभागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परं पदं स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा एतेन नमः गुस्थाः हनुमते नमः गुस्थाः सरस्वते नमः गुस्थाः देवसविता प्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే భ్రమణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమహద్వ్యక్తాఖ్య సప్తావృణేరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ గుర్మానందాష్టదిగురోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతన దళ ప్రదల మహాదల సాదల తల అతల సప్తపాదాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే
భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్ర ఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన గుమదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి షండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమని రక్షావతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదే ఉపరి విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరితి వర్ణవాయు కుబేరీశానాఖ్యాష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలవలయితే లవణేక్షుసురా సర్పిదధి క్షీరశుద్ధారకాఖ్య సప్తార్ణవపరివృతే జంబూ ప్లక్ష్యచక్రం చ సాగసాన్మలి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతి మాహేంద్రమలయ సహదృష్టమదృష్టమద్వింద్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీలావృతభద్రాశ్వకేతు కమాలకరమణక కుర్వర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరాకార పంచాశృత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హ జన్మని జాయేదక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్ధికేషు రహతి ప్రకాశే చ ఆవృత్తనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దుర్దక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామా సంఘాతపకాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలే సూర్యమండపర్యంతం గతరాశీర్వత్సహస్రావసానే ఏకైకతిలాపకృష్ణక్రమేణ సర్వరాశ్వపకరసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృతాగ్నిష్టోమత్రాత్తాప్తోర్యామ శాంతవనవాజవేయపౌండరీకాశ్వమేధారి శతకృత పుణ్యఫలావాత్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధమోక్షసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహమంతర్యామ్యర్చావతార స్వరూపరుణమైః భృగ్వాదిభిర్మన్మాదివిద్యవశిష్టాదివిత్తగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస అగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగేరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రరాణిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్త్రే ఆంగేరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రరాణిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రికర్మణో ఖ్యాతివశాది ఉత్పత్తి స్థితిరే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవశర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణ గరుడవాహనారూఢాయ అచింత దివ్యాద్భుత నిత్యయవన స్వభావలావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసు జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచ్చవనాప్నవాన ఔర్వైదల పంచార్షే ప్రవరాణిత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగణ సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అనంతగుణాత్మికాం భృగో సంకల్పతనయాం భార్గవీం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యారాసో జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీద్వమే దాస్యామి. ఋగ్యజస్సామధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యపావత్సారణి ధృత్ర్యార్షే ప్రరాణిత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం కాశ్యపీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసు జాతాయాం శ్రీ భూదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీద్వమే దాస్యామి.
कन्यां कणसम्पन्नां कनकाभरणैरुदां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्या सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि श्रीनाथ कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி மஞ்சள் குங்குமமிட்டு அதற்கு பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. திருவோண நட்சத்திரத்திலே திருவோணத்தானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை முடித்துக்கொண்டு இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜை சேவிக்கலாம். திருவேங்கடம், திருமாலிருஞ்சோலை, திருவரங்கம், திரு அத்தியூர் ஆகிய வைஷ்ணவ தலங்களை தலங்களது பெயரை வாயால் உச்சரித்தாலே சுகம் என்றும், திருமால் உறையும் கோவில் திருமாலின் தலம் ஆகிய யாவையுமே புனிதமானவை என்ற உணர்வை விதைத்தது வைஷ்ணவம். வைஷ்ணவ அடியார்களுள் இறைவனே பெருமாளை பல்லாண்டு வாழ்க என வாழ்த்து பாடியவர் பெரியாழ்வார். அவர் யசோதை நிலையில் தன்னை பாவித்து கொண்டு கண்ணனை பெற்றெடுத்த தாய் போல பல நிலைகளில் உருவகப்படுத்தி பாடும் பிரபந்தம் பெரியாழ்வார் திருமொழி. அந்த பெரியாழ்வார் கண்ணனை கைக்குழந்தையாக உருவகப்படுத்திய தாலாட்டு அனைத்து தாய்களிடத்தும் இருந்து வந்த தாலாட்டு பாடல்களை ஒற்றியே அமைந்துள்ளது. பெரியாழ்வார் தாலாட்டோடு நிறுத்தாமல் கண்ணனை குழந்தையாக்கி ஒரு கை குழந்தையின் அனைத்து குறும்புகளையும் அழகாக காட்சிப்படுத்தியுள்ளார். நாராயணன் ஒருவனையே சதா சர்வ காலமும் தனது சிந்தனையில் வைத்திருந்த காரணத்தினால் பெரியாழ்வாருக்கு கண்டதெல்லாம் கண்ணன் என்றானது. பாண்டிய நாட்டிலுள்ள திருக்கோஷ்டியூரே ஆயர்பாடியாகவும் தோன்றியதாம். வண்ண மாடங்கள் சூழ் திருக்கோட்டியூர் கண்ணன் கேசவன் நம்பி பிறந்தினில் எண்ணெய் சுண்ணம் எதிரெதிர் தூவிட கண்ணன் முற்றம் கலந்தளராயிற்றே என்று அந்த கண்ணன் அவதரித்த அளவிலே ஒருவருக்கொருவர் ஆனந்த களிப்பினால் மஞ்சளும் எண்ணெயும் தூவிக்கொள்ளவே அவ்விடம் ஆனந்த போர்க்களமாயிற்றாம். செரிமென் கூந்தல் அவிழத் திளைத்து எங்கும் அறிவழந்தனர் ஆயர்பாடி ஆயரே என்று. ஆயர்பாடி மக்கள் கண்ணன் பிறப்பில் தங்களின் கூந்தல் அவிழ்வது கூட தெரியாது கூத்தாடினார்களாம். தாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்று புரியாத ஒரு மனோ நிலையில் இருந்தனராம் என்று ஆயர்பாடி மக்களின் இன்பத்தை மட்டுமல்லாது கண்ணனின் தாயாக தன் ஆனந்தத்தையும் பதிவு செய்கின்றார் விஷ்ணு சித்தர். சின்னஞ்சிறு குழந்தையாய் தாய் உச்சி முதல் பாதம் வரை கண்டு மகிழ்வதைப் போல தாயாகிய பெரியாழ்வாரும் மகிழ்கின்றனர். அவரே யசோதையின் நிலையில் தாலாட்டையும் இசைக்கின்றார். இன்று ஹயக்ரீவ ஜெயந்தி, விகனச ஜெயந்தி. ஆகவே அவர்களையும் செவிக்கலாம், அவர்களுடைய கருணா கட்டாட்சத்தையும் பெறலாம். இதோ மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே பகவானே வெங்கடவனே கோவிந்தா 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 என்று பக்தர்கள் ஏன் அந்த கோவிந்த நாமத்தை கூறுகிறார்கள் என்றால், நாம் 100 அடி எடுத்து வைத்தால் அவன் ஒரே அடியில் நம்மை ரட்சிப்பான் காப்பான் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில். அதனால்தான் ஒவ்வொரு 3 மாதத்தின் இடையிலே அந்த எம்பெருமானை எப்படியாவது தரிசனம் செய்து அவனுடைய அனுகிரகத்தை பெற வேண்டும் என்று மழை வெயில் காற்று என்று பாராமல் ஒரு சில பக்தர்கள் நடந்து வந்து மலையேறி பெருமாளுடைய கைங்கரியத்திலே ஈடுபட்டு அவனுடைய
திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தையும் அனைத்து சேவைகளையும் கண்டு மகிழ்கின்றார்கள். எப்பொழுது என்றால் பிரம்மோற்சவத்திலே. பிரம்மா சூக்ஷ்மமாக இருந்து நடத்தும் உற்சவத்திலே அந்த 9 நாட்களும் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து பெருமாளுடைய அனைத்து கைங்கரியங்களையும் அனைத்து வாகனங்களையும் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் சேவித்து கொண்டு மனதார கோவிந்த நாமத்தை கூறிக்கொண்டு அந்த எம்பெருமானிடம் தங்களுடைய குறைகளையும் நிறைகளையும் கூறிக்கொண்டு, பகவானே எங்களை காப்பாற்று, உன்னை விட வேறு புகலிடமே எங்களுக்கு கிடையாது என்று கூறுகிறார்களாம். அப்படி அந்த கூவி அழைத்தால் ஓடோடி வருவான் கண்ணனைப் போல இந்த எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையான். அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. செவிக்கலாம் பரந்தாமனே, பக்தவத்சலனே, வைகுண்டநாதா, வெங்கடவா, கோவிந்தா 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 என்று ஸ்ரீவத்சவட்சசம் ஸ்ரீசம் ஸ்ரீலோலம் ஸ்ரீகரகிரகம் ஸ்ரீமந்தம் ஸ்ரீநிதியம் ஸ்ரீட்யம் ஸ்ரீனிவாசம் பஜேன்னிசம் என்று இன்று அந்த எம்பெருமானுக்கு சிறப்பான நாள். 3 விசேஷங்களை கொண்டுள்ளது இந்த திருமலை அப்பனுடைய திருமலையிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் கல்யாண உற்சவத்திலே. ஆவணி அவிட்டம் மற்றும் ரக்ஷா பந்தனம் மற்றும் சிராவண பௌர்ணமி, ஆவணி பௌர்ணமி என்று இந்த விசேஷமான நன்னாளிலே ஹயக்ரீவருடைய ஜெயந்தியும் விகனச முனிவரின் ஜெயந்தியை கூட கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது திருமலையிலே. அப்படிப்பட்ட அந்த சிறப்பு வாய்ந்த பகவானை இதோ திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையான். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலை அப்பனை செவிக்கலாம். வராகனிடம், அதாவது வராக சுவாமியினிடம் அந்த இந்நிலத்தினை தனக்காக வேண்டி அந்த இடத்திலேயே நிரந்தரமாக குடிகொண்டு திருமலையையே தனது மலையாக்கி கொண்டு 7 மலைகளையும் தன்னுடைய நாமத்தால் உச்சரித்து கொண்டு வரும் பக்தர்களுக்கு புகலிடம் கொடுத்து அந்த பக்தர்களை காப்பாற்றும் பரந்தாமனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. செவிக்கலாம் மாங்கல்யங்களை. கோவிந்தா கோவிந்தா. अधः सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागं समेतवस्यता सौभाग्यमत्वै दत्तायाधास्तं विपरेतन श्रिये जातश्रिय आनिर्याय श्रियम्बयोचरद्भ्यो ददाति श्रियम्बसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रोः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रामि शुभगे रक्षत्वं भवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। प्रजापतिस्त्वामुखं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वायाधास्तं विपरेतन मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यात् सुधा देवी वासवीः ब्रह्मवत्सः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु।
చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే ఇమామగ్నిస్త్రాతాంగారమత్య ప్రయాం చతుమతి వాషాత్ తదేకం రాజావరుణ్ మనధామధేగు స్త్రీపుత్రమహన్నరోధాత్ స్వాహ ఇమం మే వర్ణసుదేహముద్వాచముడియా స్వాం వస్వరాచకే స్వాహ తత్వాయాం బ్రహ్మణా వదమానస్దాశాః సేజమానోభిర్భిः అహేడమానో వర్ణే హవోదర్శిం సమాన ఆయుః ప్రమోషి స్వాహ తన్నోగ్నే వరుణస్విద్వాన్ దేవసేడవయాశిష్టాः యజుష్టో పండితమస్వహిజానో విశ్వాద్వేషాం సుప్రముత్య స్వాహ తత్తన్నోగ్నే మో భవతి నేదుస్యాస్యావసోభ్యుష్టౌ అవయక్షుణ వరుణమృణాను విహిమృడీం సుహోనేధి స్వాహ తమగ్నే అయాస్యాసన్మనసాయతః అయాసన్ హవ్యమూషేయానో దేహి వే జగ్గు స్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భూర్భువస్వ స్వాహ ఐతేన ముగ్రస్థాః హనుమతేన ముగ్రస్థాః సరస్తేన ముగ్రస్థాః దేవసవిత ప్రాసావీః ఓం భూతిపురోక్తిష్టాయాం స్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమం హోష్యే ఐతేన మన్యస్వా నుతేన మన్యస్వా సరస్తేన మన్యస్వా దేవసవిత ప్రసవ ఇమాం లాజాంతి ఆర్జమవిహార్య ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ శుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యబ్రూదే అగ్నౌ లాజానవపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహ ఉదాజుసా స్వాయుషోదోహిదేనాగమృతేనోత్తర్జన్యస్య పుష్పేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావదత్వయా విజం ధారావధన్యా ఇవ అతిగాహేమహిద్దిశః ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యువబ్రూదే అగ్నౌ లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహ ఉదాయుసా స్వాయుషోదోహదేనాగమృతేనోత్తర్జన్యస్య పుష్పేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావదత్వయా విజం ధారాధన్యా ఇవ అతిగాహేమహిద్దిశః ఇమాం లాజానవపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యువబ్రూదే అగ్నౌ లాజానవపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహ ఉదాయుసా స్వాయుషోదోహదేనాగమృతేనోత్తర్జన్యస్య పుష్పేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావదత్వయా విజం ధారాధన్యా ఇవ అతిగాహేమహిద్దిశః ఓం భూస్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం స్వస్వాహ
भूर्भुवस्व स्वाहा अयते नमगस्थाः हनुमते नमगस्थाः सरस्वते नमगस्थाः दिवसवितप्रासाभिः ओं भूतिविरोत्कृष्टायां स्यां श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वदर्वर्यादरणात् प्रायस्तात्मतो देवादिवैष्णवं भोष्ये अयतेन मन्यस्वा नुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितप्रसवा अतो देवान्तरतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधान देवतं समूढभस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाविचक्रमे विष्णुगोपादाभ्या तदधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि प्रसदेतोः वृदानुस्तेन्द्रसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन्सूर्यः दिव्योचक्षादग् स्वाहा तद्यप्रासो वन्यवोजाध्रुवागं तस्मिन् विष्णोरित्रं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा एतेन मुखस्थाः हनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितप्रासाभिः ओं भूतिविरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलसिद्धं परिष्टातन्त्रं करिष्ये एतेन मन्यस्वा हनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितप्रसवा यदस्य कर्मणोत्तिरेदं विद्यानेन महाकरम् अग्निसृष्टं करोतु स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वतः तावतेनां कामानागसमुत्रित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्ने नदाय स्वाहा अग्ने नभदे स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदे स्वाहा इन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निस्तत्पनरः जातवेदाभिषणे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात् पुनेन्द्र बृहस्पति पुनर्म्याश्व्याञ्जक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वचननिष्ठेभ्य स्वाहा भेजन्दृष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दिवराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्धै स्वाहा समृद्धै स्वाहा सर्वसमृद्धै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं वषट्कृतमत्यनोक्तञ्चेग्ने अतिरिक्तं कर्मणे क्षीणमग्नपर्वाणि प्रतिनेति कल्पयन् स्वाहा यदोऽस्यसि धीमे स्वाहा समिधसि तेजोस्तेजोमेधेः स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तिपा सप्तश सद्धाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा सिन्ति सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवैर्भुक्तं पृथिवीर्भुक्तं औषधो वनस्पतिं दर्भाश्रेष्ठैर्भुक्तं अग्निजीर्णं वेदिर्जीर्णं देवैर्जीर्णं पृथिवीर्जीर्णम् औषधो वनस्पतिं दर्भाश्रेष्ठैर्जीर्णम् समन्तां भवेशाउतेन समादित्यैरुषसम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तैश्वा सप्तषट् सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा सप्तयोनिरावृणस्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदु वेदस्त्रिपदु देवस्त्रिपदु बुद्धिस्त्रिपदु ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां मोषते वनस्पतिं दर्वासे दिप्यन्तां वेदक्षपिता महापितामह साक्षीमस्तृप्यन्ताम् इतेन मुगस्ताः अनुतेन मुगस्ताः सरस्तेन मुगस्ताः देवताप्रासाभिः पवित्रं से पवित्रं मे भूया स्वाहा पूर्णम से पूर्णम मे भूया स्वाहा अक्षतमक्षित्यं समामि आचार्य देवां दक्षता परिपन्यां सदनमसि सर्वान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामा भवोषधयो मरुतां प्रषदयश्च दिवं गच्छ ततो नो रुष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्धूतिः आदित्यस्वामो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानां त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्र्यायुषम् भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्धूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानां त्र्यायुषं तन्मे अस्तस्त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्र्यायुषम्
आपोहिष्ठामयो भुवस्थानवूर्जेदादना महेरणायुष्ये योपस्तपदमारतस्य भार्यतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारगमापोशिक्ष्यायुमदा आपो जने राजनः यत्तेऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासु नित्यग्ने तत्त्वस्विनाहं नत्वस्वी भूयासु नित्यग्ने हरस्वी भूयासु नैमेधां मे प्रजां इन्द्रियं ददातु नैमेधां मयि प्रजां मे सूर्योद्राजो दातु यो सुशीलिन्दे अग्रगां मतोर्नवाः दिभ्राजमानस्तरसमद्या समावृषभोरोहिताक्ष सूर्यो विपश्यन्मनसा अपनातु वञ्च मे सदस्य मे यज्ञवदते नमश्च यते हि न्यूनं तस्मै ते पदरेत्तं तस्मै ते नमः बालकदम्बा च तम्बा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा हुतिर्तारुपाग्नेय जातवे से भगवान् पज्जरितवो नमः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनमदासना निकृन्तभया देवान् प्रपूर्णन्तस्मै कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा वृद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमीद्य सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडो भारं निवेदयामि आज्यो भारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं वरिष्ठा सर्वं श्रीभूनिलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। वेंकटेशाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமம் பூர்ணாகூதியை செவித்துக்கொண்டு இதோ இப்பொழுது ஆண்டாளுடைய கனவின் விற்த்தாந்தங்களை கூறும் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டுகிறார்கள். கதிர் ஒளி தீபம் கலசம் உடன் ஏந்தி சதிரிள மங்கையர் தாம் வந்து எதிர்கொள்ள மதுரையார் மன்னன் அடிநிலை தொட்டு எங்கும் அதிர புகுத கனா கண்டேன் தோழி நான் என்றும் வாய் நல்லார் பூசி வாய் நல்லார் நல்ல மறையோதி மந்திரத்தால் பாசிலை நாணல் படுத்து பருதி வைத்து காய்ச்சினமா களிறு அண்ணான் என் கைப்பற்றி தீவலம் செய்ய கனா கண்டேன் தோழினான் என்று அந்த பாசுரங்களை பாடி வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை முடித்தார்கள். இதோ இப்பொழுது மாலா பரிவர்த்தனம், மாலைகளை மாற்றும் படலம். எம்பெருமானுக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் 3 முறை இந்த மாலைகள் மாற்றப்படுகிறது. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. ஸ்ரீதேவி பிராட்டி அனுப்பிய மாலையை பகவானுக்கு அணிவிக்கிறார். ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. மீண்டும் பெருமாளுடைய மாலையை பூமி பிராட்டியான ஆண்டாளுக்கு அனுப்புகிறார்கள். இதோ அந்த பூமி பிராட்டி அணிந்து கொள்ளுகிறாள். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அந்த சூடி கொடுத்து நாச்சியார் அனுப்பிய மாலையை பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. திருமலையப்பா வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இதோ மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை எம்பெருமானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். அக்ஷதாரோபணம் என்பது தலம்பிராலு கைங்கரியம். மூவரையும் ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே அமர்த்திய கோலத்தை கண்டு பக்தர்கள் கோவிந்த நாமத்தை கூறி கைகூப்பி சேவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பிராலு கைங்கரியம். அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவேறுகிறது. பக்தர்களுக்கு அனைவருக்கும் கூட பகவானுடைய தாயார்களுடைய அனுகிரகம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சேவித்துக்கொண்டு ஓம் நமோ வெங்கடேசாய
லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தராரமண கோவிந்தா கோவிந்த என்று சேவிக்கலாம் அந்த திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, వడి వెట్టిన నిధానమైన పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.